Assalamu alaikum students. I am Noor. Welcome to the computer class. Today we are going to start new chapter from your book, which is chapter number 3, control structures. So let's start the lecture. First of all, we should be clear about the concept of control structure. So control structure according to your book is defined as a statement which is used to control the flow of execution in a program is called control structures. So control structure simply tells the flow of execution in a program. It means कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ हमें ये बताता है कि यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग करनी है उसका जो फ़्लो होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो एक स्पेसिफ़िक ऑर्डर में होगी. ठीक है, एक स्पेसिफ़िक ऑर्डर में मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में. यहाँ पर वो ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि वो डायरेक्शन जो है वो टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप होगी. यहाँ पर वो क्लियरली बात कर रहा है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस राइट होंगी प्रोग्राम में या जो भी प्रोग्राम राइट होगा, ठीक है, वो एक स्पेसिफ़िक ऑर्डर में होगा. इट मीन्स ऑलवेज प्रोग्राम राइट इन असेंडिंग ऑर्डर और इनडायरेक्ट मोड और नंबर लाइन. ओके, सो जो भी हमने प्रोग्राम राइट करना है वो हमने नंबर ऑफ़ लाइंस को यूज़ करते हुए ही करना है, जो कि हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को बताएगा कि हमारे प्रोग्राम का फ़्लो किस लाइन से किस लाइन तक जा रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा प्रोग्राम लाइन नंबर 10 से स्टार्ट हो रहा है तो एंड वो लाइन नंबर 50 पर हो रहा है. तो इस तरह से 10, 20, 30, 40, 50 करके वो नंबर ऑफ़ लाइंस के थ्रू एक स्पेसिफ़िक ऑर्डर में हमारे प्रोग्राम के फ़्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को बताता है. डैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर. So now we will talk about types of control structures. So basically there are 3 types of control structures. The first one is sequence structure, second is selection structures or decision making structure, third one is loop structure or repetition or iteration structure. Now we will discuss these 3 one by one. Sequence structure. In sequence structures, the statements are executed in the same order in which they are specified in a program. It means sequence structure is a structure that executes a program in a sequence according to a number line. मीन्स ऐसा प्रोग्राम जो एक सीक्वेंस में एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहा हो वो एक सीक्वेंस स्ट्रक्चर कहलाता है. इसमें तमाम स्टेटमेंट एक ही टाइम में एग्जीक्यूट हो जाती हैं और प्रोग्राम उस टाइम तक एंड नहीं होता जब तक तमाम स्टेटमेंट सीक्वेंस में एग्जीक्यूट नहीं हो जाती. सीक्वेंस स्ट्रक्चर में प्रोग्राम का जो फ़्लो होता है वो नंबर ऑफ़ लाइंस पर डिपेंड करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नंबर ऑफ़ लाइंस का ऑर्डर जो है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, लाइक फर्स्टली हमने ऑर्डर दिया 10, उसके बाद हमने 30 दिया, फिर उसके बाद 50 दिया, देन हमने लाइन नंबर 20 दिया एंड देन लाइन नंबर 40 दिया. ठीक है, तो अब क्या करेगा वो सीक्वेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको सीक्वेंस में ही रीड करेगा. बेशक हमने उसका लाइन नंबर डिस्टर्ब कर दिया है बट वो सबसे पहले लाइन नंबर 10 को ही रीड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा. इसी तरह 20, 30, 40 अप टू सो ऑन सीक्वेंस में जो होगा लाइन को रीड करेगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा. सो इस तरह से जो सीक्वेंस स्ट्रक्चर होता है वो पहले स्मॉलेस्ट लाइन नंबर्स को पिक करता है, उनको एग्जीक्यूट करता है, देन उसके बाद वो लार्जेस्ट लाइन नंबर को पिक करता है, रीड करता है, देन उनको एग्जीक्यूट करता है. तो इस तरह से सीक्वेंस स्ट्रक्चर जो है वो सीक्वेंस में लाइन नंबर्स को एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम्स में. Let's take an example to understand the working of sequence structures. The question is, write a program to input 2 numbers and display the average on screen. So in the first we used input statement 2 times for enter 2 numbers one by one. So in line 10 we write the input statement in double quotation like enter a number. Reason is that when we write any statement in double quotation it will be directly show on the monitor screen as we write. Okay, now we need to store the result of this statement in memory. Then we declare a variable like x to store the result in memory. When we declare variable x,
then it will already takes place in memory and store this statement in memory with unique address X. Here we will repeat the same step for enter second number. After input numbers, we need to display the average on screen. So here we must declare a variable with the name of average, that is AVG. For average formula is equal to add input numbers and divided by total numbers. So AVG is equal to x plus y divided by 2. Now we use print statement to print the result in variable AVG, then end the program. Here we need to recall input statement because we use semicolon before variable x. It means during output, input statement will show question mark to take the value from user like this. Let's suppose user enter first number as 10, then cursor move line 20 and then execute input statement again as enter second number with question mark, then user enters second number as 20. Now cursor moves line 30 and here store the values of x, y with average formula and then assignment operator assign this value into the variable AVG. Now simply cursor moves on line number 40 and print the result that is stored in AVG as 15 on the screen, and then program will be terminated or end in a sequence. So in this way, these statements are executed in a sequence line by line and gives the desired result. Selection structure. A selection structure selects a statement or set of statements to execute on the basis of a condition. सिलेक्शन स्ट्रक्चर में यूज़र खुद डिसाइड करता है कि प्रोग्राम की किस लाइन या स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है और किस लाइन या स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना। अब वो डिसाइड कैसे करता है ये देखते हैं। यूज़र जिस स्टेटमेंट को या जिस लाइन को प्रोग्राम की एग्जीक्यूट करना चाहता है वो उस पर एक कंडीशन अप्लाई करता है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है देन प्रोग्राम की वो लाइन और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, अदरवाइज़ वो लाइन और स्टेटमेंट कंडीशन के फॉल्स होने पर इग्नोर हो जाती हैं और फर्दर लाइंस जो प्रोग्राम की होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। सो इस तरह से यूज़र कंडीशन को अप्लाई करके उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पर या लाइन पर डिसाइड करता है कि उसने ये स्टेटमेंट और लाइन एग्जीक्यूट करनी है या नहीं करनी। There are two types of selection structure. The first one is if-then statement and the second one is if-then-else statement. If-then statement. If-then statement in basic language is a one-way decision-making statement. if-then statement वन वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है बिकॉज़ यहाँ पर यूज़र कंडीशन के ट्रू होने पर बताता है कि क्या करना है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो नहीं बताता कि क्या करना है। मीन्स जब कंडीशन ट्रू होती है तो देन की वर्ड के बाद जो स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होती है, लेकिन अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है तो देन की वर्ड के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। Syntax of if-then statement. There are two syntax of if-then statements. The first one is if expression then statement. Means firstly हम if condition में कोई भी expression देते हैं like n is equal to 1, n is less than equal to 0 or n is greater than equal to 50 etc. These all kinds about expression. फिर हम देन कंडीशन में कोई भी स्टेटमेंट देते हैं लाइक एंटर यूर नेम, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर पॉजिटिव नंबर एट्सेट्रा। एंड इसका सेकंड सिंटैक्स ये है कि
if expression then line number. ओके मतलब सबसे पहले हम if कंडीशन में कोई भी एक्सप्रेशन देते हैं, देन कंडीशन में स्टेटमेंट नहीं देते, बल्कि हम लाइन नंबर बता देते हैं कि अगर इफ़ कंडीशन ट्रू है देन कंट्रोल इस लाइन नंबर पर मूव कर जाए एंड देन इस लाइन को एग्जीक्यूट कर दे. Let's take an example to understand the working of if-then statement. So the question is, write a program to take marks from user and tell the user if he is pass or not. In line 10, we use CLS command, that is clear screen command, to clear the screen. In line 20, we take input from user like enter your marks and enclose this statement in double quotes. After input statement, we enter semicolon because we want to show question mark during execution. Now we declare a variable like marks to store the result of this statement in RAM. In line 30, we apply if-then statement as if marks is greater than equal to 40, then question mark. Here we use question mark after then statement because during execution we take a marks from user. Now we apply condition here like if marks are above or equal to 40, then it displays congratulations, you have passed message on the screen. But if marks are less than 40, then program ends without displaying any output.